Welcome you back to another video, and in this video I'm going to solve and discuss this problem from today's Leetcode weekly contest 426, and it is first problem, easy label smallest number with all set bits. Okay, let's get started. It is saying that we'll be given a positive number n as input, and we have to return the smallest number x greater than or equal to n such that binary representation of x contains only set bits. Okay, so it is saying we'll get any positive integer as our input, and suppose we take input as n as 10. Now we have to make sure that the output's binary representation must contain all set bits, उसमें सारी bits set होनी चाहिए. Now let's see कि इस 10 की binary representation क्या है. It is 1010 1248 और जिसके ऊपर 1 है उसको ऐड कर देंगे 82 and we'll get the decimal number 10. Yes, it is correct. This binary representation is correct. Now अब 10 से वो कौन सा बड़ा नंबर है जिसमें सारी बिट्स सेट होंगी, जस्ट बड़ा होना चाहिए. इट विल बी डेफिनेटली इट विल बी 1 1 1 1. यही नंबर हो सकता है, और 4 बिट्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर 4 बिट्स नहीं लेंगे तो 10 से छोटा हो जाएगा. 10 को रिप्रेजेंट करने में एटलीस्ट 4 बिट लगती हैं, तो हमारे आउटपुट में भी 4 बिट्स लगेंगी. 4 बिट्स लगेंगी मतलब वो 4 बिट्स सेट होनी चाहिए. अब ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, लेट्स फाइंड इट आउट. 1 2 4 8 8 4 12 12 2 14 1 15. इट इज़ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15. तो अगर 10 है तो हमें आउटपुट क्या देना है, 15 देना है. ओके, इतना हम समझ गए. तो नाउ विल मूव ऑन टू द अप्रोच पार्ट. इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमने खुद लॉजिक से इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले वी आर फाइंडिंग हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अप दिस डेसिमल नंबर, इनपुट डेसिमल नंबर 10. तो हमें पहले काउंट करना है, काउंट नंबर ऑफ बिट्स required to represent given number. ओके, तो यही हम अपने कोड में करेंगे कि वी विल फाइंड आउट हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स विच आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन नंबर. ओके, हमारे पास आ जाएगा 4. इससे काउंट करने के बाद आ जाएगा 4. वो भी देखेंगे कैसे काउंट करेंगे. देन विद दैट 4 वी हैव टू जनरेट दिस 15. अब हम कैसे जनरेट करेंगे, हम ऐसे जनरेट कर सकते हैं कि इफ विल स्टार्ट विद 1 से स्टार्ट करें, देन लेफ्ट शिफ्ट इट बाय 4. देन व्हाट विल गेट, अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट नहीं पता, ये ऐसे काम करता है. अगर हम 1 को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 1 टाइम, ये तो हो गया 1. 0 टाइम करते हैं तो 1 ही रहेगा, ठीक है. अगर हम इसको करते हैं 1 टाइम, then it will move 1 place ahead in the left side. ये एक प्लेस से मूव करेगा, ठीक है. तो हो जाएगा 1 0. if we left shift by 2 position, then 1 was here, it will move 2 position in the left direction, 1 2. it will come here, and rest of the bits will become 0. will get 1 0 0. Similarly यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जैसे 2 से कर रहे हैं तो 2 0 मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 4 zeros मिलेंगे. 1 2 3 4. यहाँ पर हम 2 प्लेस से शिफ्ट कर रहे थे 1 को, तो 2 0 मिल रहे थे. 4 से करेंगे तो 4 0 मिलेंगे. तो नाउ यू कैन रिमेंबर दिस, दैट हाउ मैनी टाइम्स वी डू लेफ्ट शिफ्ट, that many zeros we get on the right side of 1. Alright, अब इससे 15 कैसे बनाएं, ये क्या है, ये तो 16 है. 1 2 4 8 16.
16 के ऊपर 1 है, देन ओनली 16 के ऊपर 1 है, बाकी सबके ऊपर 0 है, देन इट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16। अब 16 से 15 कैसे बनाए, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विल -1 हियर, देन विल गेट 15 इन विच ऑल बिट्स आर सेट। तो बस हमें यही करना है, पहले काउंट करना है नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन नंबर, देन विल take one, left shift it by number of bits and subtract 1 from it. That's it. It is our final answer. I hope you have understood the approach. Now let's code it with the same approach. सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना था कि हाउ मेनी minimum number of bits it is required to represent the given number. So we'll find out like this. I'm making a variable number of bits, then any function, we'll name it helper, we'll pass the given input as it is. Now in this function what we are going to do, we'll take this input, okay, then we'll count number of bits. Count will be 0 in the starting, and while this n is greater than 0, keep increasing count, and in the same time decrease n by dividing it by 2, then we'll return count. So in this way we'll get how many minimum number of bits are required to represent this number n. Let's see here also how this is working. See, suppose we have 10. हम अगर 10 को रिपीटेडली 2 से डिवाइड करें, व्हाट विल गेट, ये 5 टाइम्स जाएगा, एंड वी आर कंसिडरिंग ओनली इंटीजर पार्ट. सी, वी हैव टेकन दिस as int, so we'll neglect the decimal part. तो अगर हम फिर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमने 10 को 2 से डिवाइड करा, एंड काउंट हो जाएगा हमारा 0 से 1, देन we'll get 5 as quotient, then again we will divide it, we'll get 2, then count will become 2 for 5, then we'll divide 2, it will give us quotient 1, will increase our count, it will become 3. Now again it is again greater than 0, then again we'll divide, we'll get 0 this time, and our count will become 4. So in this way we have counted that 10 will represent through this binary number 1010, and it is having 4 bits, so we'll get count as 4. ठीक है, अब हमारे पास 4 आ चुका है. Now 4 is in number of bits. Now we'll do one thing, return one left shift, okay. Now it is giving expected output. Now let's try to submit it. Yes, it is accepted. Now let's show me dry run for you for any one example. Okay, let's take a 5. We are starting with 5, and in this function we have got 5 here, and we have passed it to helper. There is count variable, initialize with 0, then
We'll run this while loop. 5 is greater than 0. Yes, it is greater than 0. We'll come here and increase our count. N is 5. Now n is equals to, this is helper function, n is equals to n divided by 2. Now 5 divided by 2 will get 2. Now again 2 is greater than 0, then we'll increase our count, it will become 2, and 2 divided by 2 will get 1 as quotient. Now again 1 is greater than 0, so we'll increase our count. Yes, it will become 3. Now 1 divided by 0, and we want only the integer part, will get 0. Now 0 greater than 0, it is false here. Now we'll return this count, it is 3. Now we'll come here, we'll get number of bits as 3 here. Now 1 left shift by 3 means 1, and after that we'll get 3 zeros. Now minus 1, it is 16, and 16 minus 1, it is 16 now. 16, 8, 4, no. Yes, it is 1, 0, 1, 2, 4, 8. It is 8, not 16. Now 8 minus 1 will get 7. Will return 7. And yes, here output is 7. Alright, I hope you have understood. This is it for this video, and we'll meet next time. Till then, keep subscribing my channel. Thank you.